अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज फाउंड एसेंशियली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑप्शंस आर कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। आंसर इज ऑप्शन सी, carbon. Next is chlorosis does not occur due to deficiency of. Options are sulfur, magnesium, phosphorus, calcium. Answer is option D, calcium. Next is carnivorous plants use insect as a source of. Options are water, glucose, oxygen, nitrogen. Answer is option D, nitrogen. Next is most of the uptake of water and minerals from soil takes place through. Options are epidermal cells, root cap, root, root hair. Answer is option D, root hair. Next is which of the following is closest to the center of a woody stem? Options are vascular cambium, young xylem, old phloem, old xylem. Answer is option A, vascular cambium. Next is the diagram shows part of a section through a leaf, which arrow represent the diffusion of oxygen during photosynthesis. कह रहे कि ये जो डायग्राम है हमें एक सेक्शन ऑफ लीफ शो कर रहा है, ठीक है। आप कह रहे हैं जो इसमें कौन सा एरो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहा है। अगर आप इसको गौर करें तो ये जो लीफ का जो हमें सेक्शन दिया हुआ है, ऊपर के अपर एपिडर्मल सेल्स है, नीचे लोअर एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है। तो बीच में डिफरेंट सेल्स है। अब अगर आप देखें ये जाइलम है, तो ये वाला जो है ना हमारे पास वो जाइलम है। इसी तरह से अगर हम देखें सीओडी में ये देखें जो है हमारे पास क्या ओपनिंग स्टोमेटा है, ठीक है। उसकी कई गार्ड सेल्स है और ये देखिए ये इन और आउट मूवमेंट हो रही है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। और ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सिम्प्लास्ट इज दी movement of water through. Options are vacuole, cytoplasm of cell, cell wall, interspaces. Answer is option B, cell wall. Next is guard cells are only cells of epidermis which have. Options are vacuole, chloroplast, cytoplasm, leucoplast. Answer is option B, chloroplast. Next is the sugar moved through phloem is mostly in the form of. Options are glucose, sucrose, maltose, lactose. Answer is option B, sucrose. Next is succulent tissues are formed in. Options are hydrophytes, thallophytes, mesophyll, xerophytes. Answer is option A, hydrophytes. Next is a researcher who wants to study the composition of plant sap inserts a capillary tube into phloem. What causes the sap to flow out of tube? Structure X and Y are both part of the same. अच्छा, ये X और Y जो लेबल किया हुआ है, ऑप्शंस आर सेल, टिश्यू, ऑर्गन और वेजल। कह रहे कि ये जो हमें एक्स और वाई जो लेबल किया हुआ है ना, कह रहे ये किस चीज के पार्ट हैं, ये सेम ऑर्गन के पार्ट है, ठीक है। क्योंकि ये लीफ के पार्ट है, लीफ का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज कोलन काइमा इज द सपोर्टिंग टिश्यू इन। ऑप्शंस आर सीड्स, सीडलिंग्स, हर्ब्स, ट्रीज। आंसर इज ऑप्शन बी, सीडलिंग्स। नेक्स्ट इज द फिनोमेना ऑफ ग्रोथ इंक्लूड। ऑप्शंस आर सेल डिफरेंशिएशन, सेल एलोंगेशन, सेल मैच्योरेशन, सेल डिकम्पोजिशन। अच्छा बच्चों, जो ग्रोथ का फिनोमेनन होता है ना, उसमें तीनों स्टेप्स आ जाते हैं। उसमें सेल डिफरेंशिएशन भी इंक्लूड होती है, उसमें सेल इनलॉन्गेशन भी इंक्लूड होती है और सेल मैच्योरेशन भी इंक्लूड होती है। तो ये जो एमसीक्यू है ये इनकरेक्ट है। ये इस तरह होगा, द फिनोमेना ऑफ ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड, कि उसके अंदर क्या नहीं आता। जो ग्रोथ होती है ना उसमें सेल इलॉन्गेशन भी आती है, सेल डिफरेंशिएशन भी आती है, सेल मैच्योरेशन आती है। तो इस हिसाब से डज नॉट इंक्लूड में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सेल डिकम्पोजिशन, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट इज a researcher who want to study the composition of plant sap insert a capillary tube into phloem. What causes the sap to flow out of tube? Options are capillarity, hydrostatic pressure, root pressure, transpiration stream. Answer is option B, hydrostatic pressure. Next is
Two sealed test tubes containing aquatic plants and hydrogen carbonate indicator were set. ये आप देखिए, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर है और साथ ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है. द इंडिकेटर इन द सील्ड टेस्ट ट्यूब शो द concentration of dissolved carbon dioxide present. Concentration of carbon dioxide and color of indicator. When concentration of carbon dioxide is low, color of indicator is red. When concentration is medium, color is orange. And when concentration is high, color is yellow. One of the sealed test tubes was kept in the light for 24 hours and one of the sealed test tubes was kept in the dark for 24 hours. The results are shown in the table. Test tube kept in start color and end color. Light. स्टार्ट कलर ऑरेंज था और कलर एंड कलर हमारे पास रेड आया. डार्क में स्टार्ट कलर ऑरेंज था, एंड कलर येलो आया. व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैज टेकन प्लेस? ऑप्शंस आर photosynthesis and respiration both occur in light but rate of photosynthesis is higher. Photosynthesis occur in light but respiration does not. Respiration can only occur when photosynthesis is not taking place. The amount of carbon dioxide used and produced in the light is equal. Answer is option A. Photosynthesis and respiration both occur in light but rate of photosynthesis is higher. So students, हमारी MCQs complete हो चुकी है. Hopefully आपको समझ आ गए होंगे. If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.